StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल. Hi guys, my name is Divakar Bothra and this is the part of the series which we started on sociological thinkers. The series largely covers multiple sociological thinkers. Some are part of your syllabus, some may not be mentioned in your syllabus, but you would have to use those in order to enhance the visibility of your answers. Before all, this is the Telegram channel which I have, t.me/Divakar Bothra. All the PDFs of my sessions, whether it is of answer writing or whether it is of these globalizations or further forthcoming sessions, these PDFs would be available at this particular channel. Every day this Telegram channel would be updated by the respective PDFs which I take in the respective days. Okay. So before this, I'll just summarize what exactly was the understanding of globalizations. In the first part of the globalization series, we discussed the general understanding of globalizations, how George Ritzer defined globalizations, how O'Brien largely provided various characteristics which can be equated with globalizations and certain characteristics which largely do not indicate globalization. After providing the general understanding, the previous lecture largely focused on the scholar called as Zygmunt Bauman, the solid modernity and liquid modernity. I am pretty much aware that you have understood that concept and you are going to use the concept in the various aspects which we discussed in the previous lecture. Today, this person, Immanuel Wallerstein. Immanuel Wallerstein is also directly a part of your syllabus. Paper 1, chapter 10, the chapter which talks about social change, जिसका नाम है, उसके अंदर एक थियरी आती है डेवलपमेंट डिपेंडेंसी की. डेवलपमेंट डिपेंडेंसी के अंदर हम 3 स्कॉलर्स मेजरली पढ़ते हैं. रॉल्फ प्रेबिश, जिनकी राइटिंग से ओरिजिनेट करती है डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव. सेकंड, इमैनुअल वेलेस्टीन, एजी फ्रैंक एंड इमैनुअल वेलेस्टीन, एंड्रयू गुंडर फ्रैंक एंड इमैनुअल वेलेस्टीन. ये 3 स्कॉलर हम डेवलपमेंट डिपेंडेंसी की थियरी पे पढ़ते हैं और ये तीनों के तीनों स्कॉलर्स आपके सिलेबस का पार्ट भी है. 2022 के मेंस के अंदर अगर आपने पेपर 1 देखा है तो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव जो सोशियोलॉजी के पूछे गए थे, देयर वाज द डिमांड ऑफ दैट वाज राइटिंग डेवलपमेंट डिपेंडेंसी थियरी. Entire essence में डेवलपमेंट डिपेंडेंसी थियरी. As far as today's lecture is concerned, I'll be only restricting it to Immanuel Wallerstein and what his perspective on globalization is. Development dependency we'll be discussing in our forthcoming classes when I reach to the chapter 10 of paper 1, that is social change. Coming to Immanuel Wallerstein. Immanuel Wallerstein को समझने से पहले एक चीज समझनी जरूरी है कि the understanding of modernity was such, जो इकोनॉमिक्स के अंदर एक स्कूल है नियो क्लासिकल थियरी. In economics, there is this approach called as neoclassical theory, जो normally आप economics में पढ़ते हो trickle down approach. Neoclassical approach of development which advocated that the developed countries, once they get developed to the certain extent, the development would automatically trickle down to developing world. This neoclassical model was adopted by multiple developing countries. They started interacting with the developed world on the pretext that once the developed countries fulfill their development, the development will automatically reach to these developing countries as they would be the part or would be in touch with this developed world. But over a period of time, with the analysis of World Bank and others, in fact, Bretton Woods organizations, ये propagate करती थी neoclassical model. But over a period of time, it was seen this theory failed to bring development in developing countries. डेवलपिंग कंट्रीज में इस ट्रिकल डाउन अप्रोच से कोई, इस नियोक्लासिकल मॉडल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ. एंड एज द रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ नियोक्लासिकल मॉडल एक डेवलपमेंट डिपेंडेंसी अप्रोच डेवलप हुआ. और ये अप्रोच 3 लोग देते हैं, रॉल्फ प्रेबिश, एजी फ्रैंक एंड इमैनुअल वेलरस्टीन. Today we are going to discuss who is this Immanuel Wallerstein, what was his opinion, and how does he understand the understanding of globalizations and its impact. In essence, although you'll get this PDF, rather than repeating this PDF, my goal of these sessions is to make you understand rather than ये सिर्फ पढ़नी आपकी important है. अब Immanuel Wallerstein का ये मानना है, Immanuel Wallerstein divided the countries into 3 broad categories. वो 3 categories क्या थी? वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को 3 ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया. 1 कोर, सेमी पेरिफेरी
एंड द थर्ड वन पेरिफेरी। इन्होंने वर्ल्ड में सारे कंट्रीज को तीन ग्रुपिंग्स के अंदर डिवाइड किया। कोर अकॉर्डिंग टू इमैनुअल वेलस्टीन आर दोज कंट्रीज which are having technology supremacy, and at the same time core largely consists of those countries who are also politically and military wise powerful। और वो कंट्रीज होती है जहां पे दे हैव टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी, एंड नॉट ओनली द टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी बट दे आर आल्सो पॉलिटिकली स्ट्रांग, देयर इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड पॉलिटिकल, एंड दे आर आल्सो हैविंग ह्यूज और स्ट्रांग मिलिट्री पावर। अगर हम इसको जनरलाइज करके समझना चाहें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैन टुडे बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ कोर, एज ये तीनों चीजें बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है। पेरिफेरी आर दोज कंट्रीज who largely are suppliers of raw materials। पेरिफेरी वो कंट्रीज होती है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, और ये सप्लाई किसको करती है? दिस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज टू द कोर एज वेल एज टू द पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरीज। तो पेरिफेरीज आर दोज कंट्रीज हु सप्लाई रॉ मटेरियल, एंड एट द सेम टाइम एक और जो फीचर उन्होंने बताया, एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन कोर। ये पेरिफेरीज कंट्रीज टेक्नोलॉजिकली डेवलप नहीं होती है, न इनके पास कैपेसिटीज होती है टू डेवलप द टेक्नोलॉजीज, एंड दीज सेमी पेरिफेरी कंट्रीज आर लार्जली कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कोर फॉर देयर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और एस्पिरेशंस। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज टुडे can be considered as a part of periphery world। Semi periphery क्या होती है? Semi periphery are those countries according to Wallerstein, the cores which are in decline or the peripheries which are in rise। Semi periphery countries according to Emmanuel Wallerstein are those countries the cores which have actually declined। अगर इस एग्जाम्पल को देखूं तो रशिया टुडे कैन बी कंसीडर्ड एज अ कोर विच हैव डिक्लाइंड इन द सेंस कि देयर वाज अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू बाइपोलर वर्ल्ड, रशिया दैट इज यूएसएसआर एंड अमेरिका। आज रशिया का शायद वो सुपर पावर स्टेटस डेफिनेटली क्वेश्चनेबल है। आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट पावरफुल, बट द टाइप ऑफ पावर विच द यूएसएसआर yielded that is not yielded by Russia today। The type of political influence which the USSR yielded, Warsaw Pact and other pacts, if you have studied in your general studies and world history, is not yielded by Russia today। Or it also consists वो peripheries country जो in the rise है, जो आज modern terms में अगर हम देखें तो emerging economies। अगर just मैं roughly put up करूं, China could be considered as one part of semi-periphery, as it was a part of periphery and it is rising phenomenally, and over a period of time today it can be considered as a part of semi-peripheries, and tomorrow there is a possibility this semi-periphery country can largely be developed into a core countries। Overall, the essence of Emmanuel Wallerstein's theory as far as the technicalities is concerned is this: he divided the entire world into three broad categories। तीन कैटेगरीज में वर्ल्ड को डिवाइड किया, और अब ये बोलते हैं कि पेरिफेरीज जो होती है और जो कोर जो होता है, इनकी रिलेशनशिप पे वो डिस्कस करते हैं। एंड व्हाट इज दैट रिलेशनशिप? अकॉर्डिंग टू वेलरस्टीन, इमैनुअल वेलरस्टीन को कोई लोग ई से स्टार्ट करते हैं, कोई लोग आई से करते हैं, द चॉइस वुड बी योर्स। अकॉर्डिंग टू वेलरस्टीन, कोर और पेरिफेरी वर्ल्ड के अंदर दोनों में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। वेलरस्टीन एडवोकेट्स दैट द कोर एंड पेरिफेरी डिपेंड्स ऑन ईच अदर, वेयर द कोर डिपेंड्स ऑन पेरिफेरी फॉर रॉ मटेरियल सप्लाई एंड पेरिफेरी डिपेंड्स ऑन कोर फॉर द सप्लाई ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्निकली अगर यहां से जब वो थियरी स्टार्ट करते हैं, ये दिखाई देता है कि ये तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है दोनों के अंदर? वो जो ग्लोबलाइजेशन का वो ब्रियान बोल रहे थे इंटरडिपेंडेंस है, तो इट्स गुड सर, व्हाट्स द प्रॉब्लम?
The problem now is that the periphery, since it supplies raw materials to the core, we often see that peripheries largely are facing drain of wealth. Peripheries actually are supplying raw materials and are importing the technology, तो होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। जो अगर आप इंडिया में जाओ, दादा भाई नेहरू जी की किताब ड्रेन ऑफ वेल्थ में वैसा ही एस्पेक्ट है। इंडिया सप्लाई कर रहा था रॉ मटेरियल कोर को, तो इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लाई करने के बाद में ये कोर से इंपोर्ट करता है फिनिश्ड गुड्स, एंड एज अ रिजल्ट 10 रुपए पे हमने सप्लाई की और सपोज 20 रुपए में हमने उसी कॉटन यार्न से बनाया हुआ कपड़ा इंपोर्ट किया, तो टेक्निकली ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गई रफली अराउंड 10 रुपीज। सो Wallerstein now says this, that the periphery and core although are interdependent on each other, but this dependency is not of equal nature or equal stature. This dependency is unequal in nature. और ये अनइक्वल डिपेंडेंसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट होती है, एंड दिस अनइक्वल डिपेंडेंसी लार्जली गेट्स मोर exaggerated or becomes more stronger with the rise of globalization. तो अब अगर सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पे कभी क्वेश्चन आए तो इमैनुअल वेलस्टीन को सिर्फ इतना लिखना है कि इमैनुअल वेलस्टीन इन हिज थियरी ऑफ वर्ल्ड सिस्टम, इन थियरी का नाम है वर्ल्ड सिस्टम थियरी, हाईलाइटेड दैट हाउ the globalization have increased the dependency of developing world over developed world, and this relationship, since is not of equal nature, the developing countries, although they get the technology, but this technology is redundant or absolute, obsolete in nature. Example, हमने शिप कैरियर विक्रमादित्य रशिया से लिया और वो शिप शिप कैरियर बोल रहा हूँ, एयरक्राफ्ट कैरियर लिया, और वो एयरक्राफ्ट कैरियर The Russia was about to dismantle, और इसके ऊपर roughly around 6 billion rupees हमने खर्च किए to get the technology which Russia was largely living. और एग्जाम्पल आए दिन पेपर में हम पढ़ते हैं मिग के कारण our pilots are actually losing their life. क्यों? क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, टेक्निकली दिस टेक्नोलॉजी इज लार्जली ऑब्सोलीट इन नेचर, दोस कंट्रीज हैव लार्जली रिजेक्टेड दीस टेक्नोलॉजीज, और यही टेक्नोलॉजी इफ दीस डेवलपिंग और पेरिफेरी कंट्रीज आर यूजिंग, द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशंस विल नॉट हैपन, एंड एज अ रिजल्ट अ परमानेंट डिपेंडेंसी वुड बी क्रिएटेड ऑफ दीस पेरिफेरी कंट्रीज ऑन द कोर वर्ल्ड, एंड दिस is what the theory of Immanuel Wallerstein is. Immanuel Wallerstein in his world system theory says that how globalization has expanded the dependency of developing world over developed world. तो ग्लोबलाइजेशन को एक नेगेटिव तरीके से देखा इमैनुअल वेलरस्टीन ने, सॉल्यूशंस भी दिए। सॉल्यूशंस के लिए क्या है, इस नेगेटिव इंपैक्ट को टैकल करने के लिए आपके पास सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। इधर आप कनेक्ट करोगे इंडिया के अंदर जो रिसेंटली चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, ताकि सोशियोलॉजिकल वाले कंटेंट के अंदर आपका करंट एस्पेक्ट भी दिखाई देना चाहिए। द एग्जामिनर शुड नो दैट यू आर नॉट जस्ट मग्ड अप द कंटेंट, rather than you are in a position to apply the content showing your understandability. So the solution according to Immanuel Wallerstein as far as the world system theory is concerned is developing autarky. Autarky means self-sufficiency. It means regulated interaction with the developed world. Developing countries should only put up those connections with the world which benefits them. Absolutely opening or completely opening our economy will largely not help in order to of developing countries or periphery countries to develop. So technically this was his theory जो मैंने यहाँ पे अच्छे से बताई है। कोर, सेमी पेरिफेरी, पेरिफेरी में वो डिवाइड करते हैं थियरी के अंदर, और कैसे अनइक्वल इकोनॉमिक एक्सचेंज बिटवीन कोर एंड पेरिफेरी मींस दैट द कोर नेशन सेल्स देयर डेवलप्ड कमोडिटीज एट हायर प्राइस व्हेन कंपेयर्ड टू द पेरिफेरी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। वंस यू रीड दिस थियरी यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या है। वालेस्टाइन सजेस्ट करते हैं रिलेटिव स्टेबल एंड वेलस्टीन एक और चीज, वेलस्टीन ये भी मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर चुका है कि चांसेस बहुत कम हैं कि डेवलपिंग दैट इज पेरिफेरी कंट्रीज वुड लार्जली बी इन अ पोजीशन टू सर्व दिस टाई विद दिस डेवलप्ड वर्ल्ड। इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्हें कनेक्ट कर लिया गया है अभी। वर्ल्ड सिस्टम
theory makes it difficult for poor nations to develop and ensure that rich nation continues to be their primary beneficiaries for the global commodity supply chains. So please make sure कि these things are क्लियर इन योर माइंड. तो आपको सिर्फ एक पॉइंट यहां से जो ध्यान में रखना है, हाउ ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स डिपेंडेंसी अमंग डेवलपिंग वर्ल्ड. अगर पिछले 2 लेक्चर को मैं इसमें समराइज करूं इन नेक्स्ट 2 मिनट्स, तो हमने ग्लोबलाइजेशन देखा. ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या क्या देखा अभी तक 2 लेक्चर्स में. फर्स्ट मीनिंग देखा. मीनिंग के अंदर मैंने आपको जॉर्ज रिट्जर बताया. फीचर्स देखे. फीचर्स के अंदर मैंने आपको ओब्रायन बताया. और नेक्स्ट हमने थिंकर्स देखे. कुछ थिंकर्स के अंदर अभी तक जो हमने कवर किया है वो फर्स्ट हमने देखा था, द फर्स्ट थिंकर विच वी लार्जली डिड हियर वाज लिक्विड बॉमैन, जो लिक्विड मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट दे रहे थे. और सेकंड थिंकर जो आज हमने देखा है इमैनुअल वेलस्टीन, जो वर्ल्ड सिस्टम थियरी दे रहे हैं. तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों स्कॉलर्स आपको यूज होने चाहिए व्हेन यू राइट अ क्वेश्चन ऑन ग्लोबलाइजेशन, ताकि आपके अभी तक के डिस्कशन में आपके पास 4 ऐसे स्कॉलर्स है सोशोलॉजिस्ट जो डिस्कस करना है ग्लोबलाइजेशन का एस्पेक्ट. थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी स्टडिंग. और नेक्स्ट वी वुड लार्जली सी अनदर स्कॉलर of globalization. As far as the PDF and the other content of answer writing is concerned, जो मैंने आपसे अभी तक डिस्कस किया है, would be available at this channel t.me/Divakar Bothra. This Telegram channel is a public channel. You can join it and you'll get all the PDFs as far as these are concerned. Thank you so much. Happy studying. StudyIQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.